Good morning, student. Today we study about law penetrating to child labor. इसके पहले हमने स्पेशल गर्ल चाइल्ड के बारे में पढ़ा था, है ना? आज हम ये पढ़ेंगे. ठीक. चिल्ड्रन तो सबसे पहले लॉज पढ़ते हैं. लॉ पेनिट्रेटिंग चाइल्ड लेबर में चाइल्ड फीडिंग लेबर आता है. मैंने ये कल बता दिया था, पर फिर भी मैं आपको एक फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. कल थोड़ी वॉइस का वो हो गया था. तो 1933 में ये बना था. Then next is Employment of Children is Act 1938. So 1938 में Employment of Children आया. ठीक है. So सबसे पहले the Bombay. So shop of establishment is in 1948. Employment of Children Act कब आया था? 1938. ठीक है. The next is Child Labor Prohibition. So यहाँ पे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलर एक्ट कब आया था? ये भी एक्ट बना, मतलब ये भी लॉ है. द इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट लॉ इन 1948. प्लांटेशन लेबर एक्ट इज 1951. द माइंस एक्ट बच्चों को खदान में काम करवाते थे, तो वो भी नहीं करवाना है. ठीक है. सो द इंडियन फैक्ट्री एक्ट, द प्लांटेशन लेबर एक्ट में क्या आएगा? 1951 में आया. द माइंस एक्ट इज इन 1952. मर्चेंट शिपिंग एक्ट इज इन 1952. मर्चेंट शिपिंग एक्ट इन 1958. The Apprehension Act is in 1961. ठीक है. उसके बाद आता है द Apprehension Act is in 1961. The Motor Transport Worker Act is in 1961. The Atomic Energy Act is in 1962. And the Motor Transport Worker वाला भी जो एक्ट आया था वो 1961 में आया था. द एटॉमिक, उसके बाद द एटॉमिक एनर्जी एक्ट इज इन 1962. ओके. सो ये सारे एक्ट आए. बीड़ी एंड सिगार वर्कर का कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो रहता है एक्ट इन 1966. स्टेट शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट आया था. The special care of girl child and female infanticides is Feticides is an act that caused by the death of fetus. बच्चों को जो भ्रूण हत्या होती है उस पे से ये निकला था. ठीक है.
So यहाँ पे फेटिसाइड्स का मतलब होता है जो फीटल भ्रूण हत्या जो होती है वो स्पेशली लड़कियों के लिए। ओके, सो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है फीमेल फेटिसाइड्स का। पहले क्या होता था कि लोग है ना पहले चेंज चेक कर लेते थे कि प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स की वजह से कि मेल या फीमेल फीटस है। ठीक है, एंड देन फेटिसाइड इज एन सीरियस क्राइम। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में। तो यहाँ पे प्रैक्टिस की, फिर ये ऑपरेशन 1 जनवरी 1996 तक चला और फिर ये एंड कर दिया। ओके, सो दिस एक्ट लॉ, female feticide act is an aborting the fetus because it is female. This is a major social problem several country including India भी, मतलब इंडिया को छोड़ के और भी जगहों पे ऐसा होता था। उसके बाद denial to a child, girl child, this is a girl child to her right to a life is in one of the heinous violence of the right to female. Female infanticide, selectively abortion are most often practiced to the societies they made due to belief in having a girl child is a culturally and economically less advantage than having a boy child। है ना, कि मतलब वो कमा नहीं सकती, ये सब सोचना होता था ना कि इस तरीके से किस जो लड़कियां होती है ना, जिस तरीके से सोचते हैं ना ये लड़की कि कमा नहीं सकती, उस पे इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली अच्छा नहीं है और ये फाइनेंशियली ट्रबल मेकिंग होता है ना, इसीलिए इनको मार दिया जाता था। फिर आगे जाके ये एक्ट बनने के कारण उनको बचाने लगा। फिर दिस एक्ट लेज डाउन द सिचुएशन in which the use of prenatal diagnostic techniques it prohibited, as also where the regulate it has provision to punishment of rupees 1000 to 1 lakh or in permission and 3 to 5 years। तो इस तरीके से so as per the every genetic counseling central genetic laboratory of genetic clinic is required to prominently display the premise
notice English and in the local language to inform the public to effect the disclosure of sex of the fetus. कि मतलब जब भी जहाँ पे भी आपने देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में, है ना, हॉस्पिटल्स वगैरह में ये डिस्प्ले किया जाता है कि मतलब स्पेशली गायनिक हॉस्पिटल में कि सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं हो पाएगा. सो यहाँ पे नेक्स्ट आगे हम देखेंगे कॉज ऑफ फीमेल फेटिसाइड्स. कॉजेज ऑफ फीमेल फेटिसाइड्स में आएगा 4 कॉजेज. 4 कॉजेज आते हैं, 5 to 6 कॉजेज आते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे मेल चाइल्ड इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट. यहाँ पे जो फीमेल फेटिसाइड्स के कॉजेज क्या है, भ्रूण हत्या के कॉजेज क्या क्या होते हैं जो फीमेल गर्ल्स होती हैं उनके. तो उनको ऐसा उनका ये मानना था कि मेल चाइल्ड है वो जो बेटर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो आगे जाके मतलब बुढ़ापे में मदर फादर को सहायता करता है, राइट. फिर आता है फीमेल चाइल्ड इज एन गैम्बल. गैम्बल फीमेल चाइल्ड एक तरह का गैम्बल है, मतलब जुए के जैसा है कि उस पे पैसे लगाओ इतना समय तक उसको बड़ा करो, उसके बाद उसको डाउरी सिस्टम में, जैसे कि उसको जब शादी कर रहे थे उसको डाउरी देनी पड़ती है, तो इस वजह से उनको ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा ट्रेजिडी वाली चीजें होती है ना, इस तरीके से. उसके बाद फिर आता है कल्चर कंसर्न. कल्चर कंसर्न का जो एग्जाम्पल है वो है female in the society believe that having a male child put them on a higher social status and also believe that male child can look after them during the old age. Cultural concern ये है कि जो female child है वो क्या करते हैं, चले जाते हैं. जो कल्चर कंसर्न के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो हायर सोशल स्टेटस वगैरह रहते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जो मेल है उसको हमें मतलब वो हमको आगे तक हमको रखेगा, हमारे साथ रहेगा. लेकिन जो फीमेल है उसकी जो शादी हो जाएगी वो चली जाएगी, तो उसकी वजह से हमको कोई फायदा नहीं है. इस वजह से भी वो लोग सोचकर ये कर देते थे. फिर वुमेन डोंट हैव स्टेटस इन सोसाइटी, क्योंकि औरतों का कुछ ये नहीं है, सोसाइटी में कोई स्टेटस नहीं है. तो इस वजह से वुमेन doesn't have status in society. People believe that the men have better status in the society compared to women. लोगों को ये लगता है कि जो मेल है उनकी वो बेटर है और सोसाइटी में उनका कोई स्टेटस है, तो फीमेल का कोई स्टेटस नहीं है. एज अ रिजल्ट इंस्टीट्यूशनल एंड कल्चरल सेक्सिज्म ऑफ फीमेल चिल्ड्रन and adult have less power, status, rights and money. Female feticide. इसके वजह से इंस्टीट्यूशनल और कल्चरल सेक्सिज्म फैल गया, जिसके वजह से फीमेल्स और चिल्ड्रन जो हैं एडल्ट उनका कोई राइट्स और कोई वो नहीं रहने की वजह से कुछ रहने की वजह से उन लोगों को ज्यादा ये नहीं देते. When उसके बाद आता है पुअर मेडिकल एथिक्स. उनके मेडिकल एथिक्स अच्छे नहीं है, मतलब कि उनको पता नहीं रहता है ना, उनके रिलीजन उनके बिलीफ सिस्टम अच्छा रहता था. यहाँ पे with the legislation of abortion and Indian illegal sex determination,
and transmission of the termination of the pregnancy become everyday facility. Then professionally, medical field is only too glad to help presents realize their down ड्रीम में एंड हेल्दी बेबी बॉय उनको ऐसा रहता है कि हेल्दी बेबी बॉय ही अच्छा रहेगा फिर आता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ industrialization of the growth sector has further establishment and practice of the growth gadget and sex selective abortion. These manufacturers of high-tech equipment and gadget benefit and presence of for male children. फिर आता है advancement in medical technology have made in a more easy determine the sex and of the baby such as ultrasound and amniocentesis. ये amniocentesis भी बंद कर दो. Okay, then consequences of female feticide. Squid sex rations. Squid sex ration. उसके बाद आता है increase inside of rape और incidence of rape. ठीक है और डिक्लाइन इन पॉपुलेशन फीमेल ट्रैफिकिंग की वजह से फीमेल ट्रैफिकिंग वही जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं ना उनको ले जा लेते हैं उसकी वजह से है ना सो preventive measures can community education regarding to the importance of girl child and consequences of फेटिसाइड्स फिर आता है कैंसिलेशन और देखो कम्युनिटी में इस चीज़ का गर्ल चाइल्ड का इम्पोर्टेंस बताना पड़ेगा तब जाके लोगों को पता चलेगा दे नॉट अवेयर ऑफ दिस
फिर कैंसलेशन, परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ डॉक्टर, परमानेंटली अबॉर्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइसेंस और इन्वॉल्व होना चाहिए प्रैक्टिस अबॉर्टिंग फीमेल फीटस बिकॉज ऑफ जेंडर, जेंडर की वजह से भी फीमेल फीटस को हम क्या कर सकते हैं, अबॉर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोविजन फॉर पेशेंटली कंप्लीमाइज टू द स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग or medial equipments used for illegal sex determination and abortion of unlicensed clinics, ठीक है। ये प्रोविजन करना चाहिए। फिर आता है हाई फाइन्स, जुडिशियल एक्शन against the presence of knowingly try to kill the unborn baby, ठीक है। ये अनबॉर्न बेबी को भी किल करने का काम करता है। नेक्स्ट इज स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ द पीसीपी एंड डीटी एक्ट होता है ये 1994 में, ठीक है। फिर आता है ये कंसेप्शन एंड प्रेजेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, ठीक है। स्ट्रिक्ट री इन्फोर्समेंट लिया गया है इस चीज के लिए। ओके, देन आता है widespread campings and seminars for young adults and potentially present to the enlightening them about the illness effect of family female feticides जो भी होती हैं, ये सारे इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि हमको कौन कौन सा एक्ट लेना है, क्या क्या चीजें करनी है, जुडाइशल नोइंग मतलब उनके जो राइट्स हैं उनको भी हमें ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को करना है। So, thank you class. That's it for today. Tomorrow we'll continue the next topic. हमको नया चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। स्नैपशॉट यही है, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन पढ़ा हमने, ठीक है। नो शुड बी इंश्योर दैट रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ एक्ट, ठीक है, द चिल्ड्रन शुड बी लॉन्च्ड बाय 1986, चाइल्ड अब्यूज, फिजिकल और सेक्सुअल इमोशनल, है ना, मिसट्रीटमेंट की वजह से, मेजर रीजंस ऑफ चाइल्ड लेबर, पॉवर्टी और ये सब। Okay. Thank you, class. That's it for today.